Yes. Chalo. Good evening, all of you. Let us see the next topic in this chapter, that is about the interference of light. Okay. So जैसा कि हम जानते हैं, when the two waves arrive at a point simultaneously, each wave produces its own displacement at that point, independently of the other, and the resultant displacement at that point is going to be the vector sum of the displacements produced at that point due to all the other waves, all the waves meeting at that point. So this is called as the principle of superposition of waves. मतलब जब दो वेव्स एक पॉइंट पे आके मिलते हैं, मान लो एक वेव इस तरफ से और एक वेव इस तरफ से आके मिल रहा है, तो होता क्या है ना कि हर एक वेव जो है वो अपना खुद का एक इफेक्ट प्रोड्यूस करती है किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे. फॉर एग्जांपल, अगर मान लो कि एक स्ट्रिंग है और वो एक रिंग है और इस रिंग को दो स्ट्रिंग्स हमने बांध के रखे हैं इस तरह से, और ये रिंग सपोज एक रॉड में से हमने पास करके रखा है. ठीक है. तो जैसे ही हम यहाँ पे एक जर्क देंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, ये जर्क इस तरफ ट्रेवल करेगा, एंड व्हेन दिस जर्क विल जस्ट रीच एट दिस पॉइंट हियर, इट विल जस्ट एक्सर्ट अ फोर्स इन द अपवर्ड डायरेक्शन ऑन द रिंग इन दिस वे. ठीक है. बिकॉज ऑफ दैट द रिंग विल जस्ट गेट लिफ्टेड अप फॉर अ शॉर्ट टाइम and will just start vibrating if we continuously give the vibrations here. And in the same way, at the same time, if suppose we give another jerk here, that jerk also will just travel towards the center or towards the ring, and when this jerk will reach at this point here, it will just exert a force in the upward direction. Because of that, this ring will just get lifted up. So if suppose both of these jerks reach at the same time, at the same point, then their amplitudes will just get add up together. That means if we consider the amplitude of this first jerk as A1 and amplitude of the second jerk to be A2, then the resultant amplitude R here will actually be equal to A1 plus A2, no doubt. This is the one of the case when the two jerks or two waves just arrive at a point in such a way that their phase difference is zero. That means they are in same phase. Crest of one wave just incidents on the crest of other, or trough of one wave just incidents on the trough of other. In that case, we say that constructive interference takes place. Okay, constructive interference isko bola jata hai. But on the other hand, if suppose the another jerk here given here is just opposite in this way, then that will also travel in the same direction and just will exert an opposite force on the ring here in this way. And because of that, the resultant force on the ring will be just equal to the difference of both of the forces. And because of that, we can just say that the resultant amplitude here is actually going to be the difference of the amplitudes of both of the waves meeting at a point here, and hence we can just get it as the resultant amplitude will be equal to A1 minus A2. This is actually called as destructive interference. Destructive interference in which the two waves arrive at a point in opposite phase. That means the crest of one wave just incidents on the trough of other, or trough of one wave just incidents on the crest of other. In that case, we just can see that the resultant amplitude becomes minimum in this case, and this is called as a destructive interference. Both of these, constructive as well as destructive interference, these are the types of interference we can see. But what is interference basically? Interference is the redistribution of energy when the two waves arrive at a point simultaneously. The two waves which are traveling in the same direction arrive at a point simultaneously, then the redistribution of energy is actually called as interference. Or we can also define it in another way, that the cancellation or enhancement of amplitudes when the two waves arrive at a point simultaneously, that is called as the interference. तो जब दो वेव्स एक पॉइंट पे आके मिलते हैं तो उनके मिलने की वजह से उनके एम्पलीट्यूड का ऐड होना, मतलब बढ़ना, या एम्पलीट्यूड्स का घटना, यही इंटरफेरेंस कहलाता है. ओके, अभी ये इंटरफेरेंस जो है, इट इज शोन बाय ऑल टाइप ऑफ वेव्स. ऑल टाइप ऑफ वेव्स, मे बी मैकेनिकल, और मे बी लॉन्जिट्यूडनल, और मे बी ट्रांसवर्स, मे बी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक,
और मे बी एनी टाइप ऑफ वेव्स, कोई भी टाइप ऑफ वेव्स जो है वो इंटरफ्रेंस शो करते ही है, बिल्कुल। whenever the two waves arrive at a point simultaneously, they may either uh, add their amplitudes or maybe they subtract their amplitudes, or depending upon their phase difference, the resultant amplitude may be vary from 0 to double of amplitudes in this way, 0 to maximum मतलब you can say। तो ये जो फिनोमेना है इसको ही इंटरफ्रेंस बोलते हैं, and it is the property which is exhibited by all type of waves, so light waves also, लाइट वेव्स के द्वारा भी इंटरफ्रेंस शो किया जाता है। तो अभी लाइट वेव्स के इंटरफ्रेंस के बारे में अगर हम बात करेंगे तो होता क्या है ना कि अगर सपोज दो लाइट के वेव्स है, ये लाइट वेव और ये दूसरा लाइट वेव, अगर एक पॉइंट पे आके मिल जाता है और दोनों का वेव फेज अगर सेम ही है, if they have the same phase, that means crest of one wave incidents on the crest of other, or trough of one wave incidents on the trough of other, then in that case the resultant point, that particular point where the two waves meet with each other, becomes bright, more bright, and hence we can just say that the intensity at that point is going to be maximum in this case, and hence we can say that the constructive interference is taking place here। but if suppose the thing reversed, उल्टा अगर हो जाता है, suppose two light waves arrive at a point simultaneously, and suppose that crest of one wave just incidents on the trough of other, उल्टा अगर हो जाता है इस तरह से, जिसमें crest of one wave incidents on the trough of the other, or trough of one wave incidents on the crest of other, then in that case both of the amplitudes just cancel each other, and that particular point, or that particular point of the medium just remains dark। its intensity at that point is zero or minimum, we can say। so this happens and this is called as a destructive interference। so जैसे ये कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जो होते हैं तो वो लाइट में भी वैसा ही होता है, सिर्फ लाइट में फर्क ये है कि जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है तो वहां पे हम कहते हैं कि इंटेंसिटी इज मोर, एंड इंटेंसिटी ज्यादा होने की वजह से उसको हम क्या बोलते हैं, it is going to be constructive interference and the point is going to be bright, remember। and when it happens, when crust incidents on the crust or trough on trough, okay। but when the reverse thing happens, like crest of one wave incidents on the trough or trough on crust, then in that case the resultant intensity at that point is going to be minimum, and hence the point will appear to be dark, क्योंकि लाइट के हिसाब से ब्राइट एंड डार्क यही दो चीजें हमको पता चलती है। इसलिए जब पॉइंट डार्क मिलता है तो वो पॉइंट, उसको हम बोलेंगे destructive interference takes place at that point, and hence the point appears to be dark, and the intensity of that light of the light at that point will be minimum, remember। so this is already actually the concept of interference of light। अभी देखो this interference is governed by the principle of superposition। principle of superposition already, which we have already seen in the chapter principle of superposition or superposition of waves, which tells us simply that when two or more waves arrive at a point simultaneously, each wave produces its own displacement at that point independently of the other, and the resultant displacement at that point is going to be equal to the vector sum of the displacements due to all the waves, ठीक है ना, meeting at that point। so in this way this is the principle of superposition। एक्चुअली प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन इज अ वेरी ब्रॉड कंसेप्ट, ठीक है। उसके अंदर इंटरफ्रेंस भी आ जाता है, बिट फॉर्मेशन भी उसमें आ जाता है, और इवन स्टेशनरी वेव्स का जो फॉर्मेशन है वो भी उसके अंदर ही कवर हो जाता है। बट वी आर स्पेशली गोइंग टू फोकस ऑन इंटरफ्रेंस ऑफ लाइट इन दिस सेक्शन ऑफ दिस चैप्टर, ओके। सो लेट अस सी इंटरफ्रेंस पैटर्न नाउ। व्हाट इज इंटरफ्रेंस पैटर्न? तो देखो बेसिकली होता क्या है ना, इंटरफ्रेंस पैटर्न मतलब क्या, एक सिंपल सा एग्जांपल लेके हम देखेंगे। वाटर का अगर एग्जांपल लेते हैं तो वाटर के एग्जांपल में हम देख सकते हैं कि अगर सपोज एक वाटर का टैंक है इस तरह से, उसके अंदर सपोज ठीक है, ये सपोज दिस इज द क्रॉस सेक्शन ऑफ द टैंक containing water, okay, and suppose that there are two pins which are kept in this contact with the water, ठीक है। तो वाटर के कांटेक्ट में हमने दो पिन रखे हुए हैं जो ऐसे अगर रखे हुए हैं सपोज,
ये देखो ऐसे ही, ठीक है। तो जो ऊपर नीचे अगर करेंगे तो जैसे ही वो नीचे जाएंगे तो वाटर के साथ सरफेस के साथ कांटेक्ट करेंगे, और जैसे ही वो ऊपर आएंगे तो कांटेक्ट लूज करेंगे। सो बिकॉज ऑफ दैट द रिपल्स विल बी प्रोड्यूस्ड इन द वाटर। तो वाटर के अंदर जो रिपल्स प्रोड्यूस होंगे तो वो हम इस तरह से यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। द फर्स्ट रिपल प्रोड्यूस्ड हियर इज द क्रस्ट, and the second one which is shown by this dotted line is going to be a trough. You can see again the third crust, and then fourth will be trough, like this. Again this next will be crust, and the next will be trough. देखो ये एक का हो गया है कि नहीं। सेम वैसे हम दूसरे का भी ड्रॉ कर सकते हैं। देखो तो इस तरह से हम देख सकते हैं आराम से कि अल्टरनेट क्रस्ट ट्रफ यहाँ पे मिलते जाएंगे, एंड whenever we get the crust incidents on the crust, then we can get the constructive interference, and whenever we get the crust and trough अगर meet each other, then we can get the destructive interference. उसके बारे में आप just refer to the diagram in the textbook which is given there. Or just I can show you the simple animation to explain this.